So this part is our local headwears. जी Yeah, the chugumas. हम सफ़र किया रात और 700 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ ख्वारज़म एक बहुत बड़ी स्टेट थी पहले, और एक बहुत बड़ी किताब भी है ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही। हम ख्वारज़म के शहर और गंज रात गुजारी, और अब हम उसका एक मशहूर शहर है तारीखी खीवा, खीवा में है। खीवा असल में ये वो जगह है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम और साम थे। यहाँ साम का क़याम था, जैसे आपने लफ्ज़ सुना है सामसंस, शाम का क़याम है। तो ये वो जगह है जो एक बहुत तारीखी जगह है। 2500 साल पहले का ये किला है। खीवा दरअसल कुआं को कहते हैं, सहरा था, डेजर्ट था, यहाँ कुआं बनाया गया। उस कुएं को पानी की कमी थी, तो पानी की कमी के बाद ये कुआं फिर बनाया गया। ये 26 एकड़ का एक किला है, बहुत बड़ा, और 54 इसमें मज़ीद अंदर छोटे छोटे और कम्प्लेक्स और किले हैं। बड़ा किला है लेकिन 54 कम्प्लेक्स और किले इसके अंदर मौजूद हैं। और ये सारे जो कुछ भी हैं ये देखने के काबिल हैं। एक तारीख़ बताती है कि इंसान ने अपनी हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहांरानी और हुक्मरानी के लिए क्या चीज़ें बनाई थी और किन चीज़ों को इस इंसान ने तामीर किया था। ये सारी बाक़ियात हैं, जहाँ देखने के काबिल है वहाँ एक और भी चीज़ हमारी तबीयतों में आ जाए, इबरत भी है। आए हम आगे चलते हैं। Inside. And 260 students studied at the same time in this madrasa. And this madrasa open for everyone, which means that the local and foreigner could study in this madrasa. चलें। किले के अंदर हम इस वक्त एक मदरसे में हैं। ये किले के अंदर का मदरसा है, क्योंकि किला असल में अंदरून शहर था। किला शहर किले के अंदर था। ये हम मदरसे के अंदर सहन में आ गए हैं। ये मदरसे के अंदर कुआं है, ये कुआं है। ये नीचे उसके आस्थाना है, खानका है, और इसमें औलिया, सुलहा, बुजुर्ग, वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीर, नजीब, अबरार, ये सब हज़रात इसमें अल्लाह अल्लाह लोगों को सिखाते थे और अल्लाह अल्लाह का नाम पढ़ाते थे। इस मदरसे में 130 कमरे हैं, हमारे गाइड बता रहे हैं। एक कमरे में 2 स्टूडेंट होते थे जो यहाँ रहते थे। अब हर कमरा होटल है और उसमें टूरिस्ट हैं। ये कुछ टूरिस्ट के सामान भी बाहर पड़े हैं, और जो आने जाने वाले आते हैं मुसाफिर, पूरी दुनिया से यहाँ लोग सैर करने आते हैं। ख़ास तौर पे अंग्रेज़ बहुत आते हैं सैर करने के लिए। ये मदरसा है खीवा शहर के अंदर। और अस्सलाम वालेकुम। ये मदरसे के अंदर कमरा, उसके साथ अटैच बाथ, और जहाँ बैठ के तलबा पढ़ते थे और बैठ के अल्लाह का नाम सीखते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, ये मदरसा है। ये उसके सामने एक और मदरसा है जो अब उस होटल का ये रेस्टोरेंट है। आप देखें इस पे मदरसा रोको हाल, ये 1288 लिखा हुआ है, 1288।
1300, 1400, 1288 का ये तामीर करता है। ये मदरसा, ये उसका फिर ये बहैसियत रेस्टोरेंट है। ये उसका रेस्टोरेंट है जो सुबह नाश्ता कर लिया है। अब सफाइयाँ हो रही हैं और दोपहर का जो है इंतजाम हो रहा है। ये मदरसा है। This is the smallest madrasa, not the big like the king, because this madrasa erected by the financial minister. The financial minister was Diwan Begi. Nowadays, this is the restaurant of this the hotel in this madrasa hotel restaurant. Streets, which is the connected each other. बच्चा चुप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। किले के अंदर And this is हम the बादशाह के prison, महल के the zindan. This part is the zindan, the small building. Let's see the zindan. ये बादशाह का महल। ऐसे लोग होते थे, बैठ के बंदा लिख रहा है, कलमी मखतूतात हैं। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे होते थे, हिफाजत करने वाले ऐसे होते थे, कोई लिखने वाले, कोई सोचने वाले, कोई तहफ़्फ़ुज़ वाले लोग थे इस किले के अंदर। पुराना असलहा, पुरानी तलवारें, ये दुर्रा पड़ा हुआ है। ये है दुर्रा, चमड़े का आगे हिस्सा है और ये दुर्रा है, इसको दुर्रा कहते हैं। दुर्रा है, Durra, Darra. We call Darra. Darra। Yeah, ये है दुर्रा, जिसको हम दुर्रा सुनते हैं, कितने दुर्रे मारे गए। ये दुर्रा है। ये बादशाह, उस दौर के बादशाह की पुरानी तस्वीरें हैं। Court guards. जी हाँ। And punishing methods in here, both men for and women in here. Impaling, burning alive, stoning, and through top of the minaret, and woman punished this also. And here king's degrees for punishing the criminals in here. Original king's letter. Mister, okay, sorry, okay, no problem. So this is the king's palace, which is the one of the oldest part of Ichankala, Old Kunya Ark, which means the old sixth ship. In summertime, the ये king. किले के बादशाह का महल है। बादशाह के महल के अंदर मस्जिद है। अल्लाह, अबू बकर, मोहम्मद, उमर, उस्मान, अली। अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये मस्जिद है उसके अंदर, बादशाह के महल के अंदर। बादशाह का दरबार है। बादशाह यहाँ बैठता था। उसका तख्त, ताज, उसकी छत, उसकी दीवारें, उसका अंदाज। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कैदी खड़े होते थे, या सवाली खड़े होते थे, या साइल खड़े होते थे।
जो बयान करते थे अपनी फरियादें, अपनी अरदासें। I use this tandoor nowadays for baking the bread and sumsas for the sweet dishes in here. Yeah, the madrasa, the next place, the second largest madrasa in Khiva. It is erected by one of the greatest king in Khiva, Rahim Khan King. Muhammad Rahim Khan erected. Welcome. एक और मदरसे में दाखिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा मदरसा है, डबल स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। Inside the 80 rooms, almost 80 and 160 students studied at the same time in this madrasa. And this was a rectangular shape and two-story building in this madrasa. डबल स्टोरी बिल्डिंग। Yeah. अस्सलाम वालेकुम। You know, the building structure also the same because of the son of the masters continued his father's job without any changes. ये बादशाह है, अच्छा है राहिम खान। राहिम खान जिन्होंने ये मदरसा बनवाया था, बादशाह राहिम खान। अच्छा। And he managed the Khanid record for 47 years. The Rahim Khan, this manager, and he was the record controller and ruled in 47 years. ये नाम क्या है? Rahim Khan, Rahim. portrait of the Rahim Khan. Look at this well. This Khaywa here. ये वो पुराना कुआं है जिसकी तस्वीर दिखाई है, खेवा, जिसकी वजह से ये शहर खेवा है और ख्वारज़म जो है जमीन है, उसका एक शहर है और चंग के साथ है। तो ये उस कुआं की तस्वीर दिखाई है, उस दौर के पुराने दरवेश साथ खड़े हुए हैं। ये कुआं था, बुनियाद ये कुआं बना फिर शहर बस गया सारा। नकाब होता था, इस दौर का हिजाब, नकाब, पर्दा ऐसे होता था। औरतों ने नकाब उठाया हुआ है, ये उसकी उन्होंने कॉपी दिखाई है, असल नहीं है। ये दरवाजा before every place, every madrasa, this darwaza. Rahim Khan, king, the ministers and Russian ambassadors in here. ये पुराने अमीर, पुराने बादशाहों की शक्ल। Badsha, Rahim Khan, बादशाह guards. जी। And look at this, the middle of the portrait, this the Prime Minister, Islam Haja, Prime Minister, and he opened the first hospital, post office, highest minaret, and madrasas. He was the author of so many buildings. Yeah, this is the first photographer. Look at this, all the pictures taken by this guy. ये सामने मस्जिद है, हम मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और the next one is a mausoleum, and we will go to the mausoleum. फ़ज़ाएं कलमे की, अल्लाह के नाम की, उसके हबीब की, ये मस्जिद। Nowadays, the restaurant. This place nowadays the restaurant, not the masjid. अब रेस्टोरेंट है। Yeah. So let's go. The next place is the mausoleum. We will see the mausoleum, famous mausoleum. It's free. This one is the shop. Yeah, shop. And this is the traditional Khivan materials in here. Yeah, the clothes in here. This is the clothes. ये डबल कोहान वाला ऊँट है, दो वाला। Come on. Yeah, two hills. Come on. Come on. Building. Now this is the mausoleum. Saint Alauddin in the 14th century. He was also the follower of the Prophet Muhammad. हम एक शेख अलाउद्दीन, एक बहुत बड़ी हस्ती थी,
उनकी खानकाह के सामने खड़े हैं, ये उनके मज़ारात हैं हमारे सामने हैं। हम उनकी खानकाह में जा रहे हैं। शेख की ये खानकाह थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेख की ये खानकाह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी वआफ़िनी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये उनकी खानकाह है। अल्लाह का नाम। आज भी वो पुराने अल्फाज जो बाकी बचे हुए थे फ़ारसी के अशार, जिसमें रूहानियत, शुमूली शेख अलाउद्दीन रूहानियत, वो सारी चीज़ें आज की लिखी हुई हैं उनकी खानकाह में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Allah. Madrasa. Nowadays the museum of Arabic streets. At the primary school. Really sucked the class. That was very, very bad. What is this? ये मस्जिद है। जामे Madrasa. मदरसा। This is the madrasa. Madrasa. This place is also the madrasa, which is erected by one of the minister in Khiva for studying for students. So ये एक जुमा मस्जिद, जामे मस्जिद है, जिसमें सारे बादशाह, वज़ीर सब इसमें जुमा पढ़ते थे। बहुत बड़ी मस्जिद है। आप हैरान होंगे इसके मीनार देखें, इसके मिंबर देखें और इसके स्टोन देखें, कितना ज़्यादा। ये जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद है जहाँ मिंबर सजते थे, जहाँ अल्लाह ताला रसूल का निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम। ये जामे मस्जिद है। ये कुआं है टूटा हुआ। ये जामे मस्जिद का मिहराब है। सफ़ेद सजती थी। just the mihrab. ये जामे मस्जिद है। And here 213 stone in here, pillars in here. And all of them mathematical true installed. All of them in here. And here you can see the different period stones in here, which is the start from the 10th to 18th century.
Juma, the biggest mosque in Kyrgyzstan. Assalamu alaikum. 係嘛？我哋以為做鯊魚肉嘅點冰島，我通常食海鮮咯。鯊魚啊！ It's also the madrasa. Nowadays the museum of the independence of Uzbekistan. Okay. Yeah, all of them the history of the after 1991. All of them described in here. Modern Uzbekistan history in here. That's our first president, Karimov, Mr. Karimov. Yeah. सब मदरसे This is the agency. Sardoba. You know the Sardoba is the water basin. Water basin we call it Sardoba in the Khanate period, and the people kept drinking water in here. एक और मदरसे में है, वहाँ पुरानी रीत रिवायत वही है कि पानी नीचे कुएं से भरने के लिए हर तरफ मदरसे के कमरे हैं। ये कुआं है और ये कुएं की सीढ़ियाँ हैं कि हम कुएं की सीढ़ियों से नीचे उतर कर पानी भरे। आए हम नीचे उतर रहे। Tamam, bileti bazı göster. Tamam, bilet. हैरतअंगेज बात यह है, कुएं के अंदर रोशनी है, तो ऐसा रोशनी का इंतजाम किया हुआ है। आगे फिलहाल तो इन हजरात ने लोहे का दरवाज़ा लगाया हुआ है। ये कुआं है जो अब खुश्क हो चुका है, तो इसके अंदर ऊपर से रोशनी आ रही है और यहाँ से लोग जाते थे और जाके पानी भर के लाते थे। सीढ़ियाँ थीं, फिर सीढ़ियाँ थीं, फिर सीढ़ियाँ थीं। ये सिलसिला था पानी भरने का। Master, he made this, the khanjars, knives. ये उस्ताद हैं खंजर वगैरह चीज़ें बनाने में। Bir yerde kılıça imkaniyeti yok. Düşündürüp koyun. Bir yerde meyde işlerle şuurlanıyor bunlar. Vakayı da Afganistan mı? ये हालवन रस्सा है जिससे लोग रस्से पे चलते हैं। अकरम अवरअा ताला रहीम बादशाह Allah kulü kan. Because he erected
Nurullah Palace, yes. Azabah Palace. Azabah. Azabah. वाइट मास्क एक मस्जिद है। White mosque. मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ के मुअज्जिन अजान देता था। यहाँ से गुजर के इस जगह खड़े होके मुअज्जिन अजान देता था। Muazzin calling for prayer. ये मेहराब Gate. We call it the Halawan Gate. The name of this gate, Halawan. In the past, this place was the sauna in Khanid period. In Khanid period, this building. अभी फिलहाल इन्होंने इसको रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। हम्माम Yeah, I haven't forgotten the name. Sauna. We also say hammam. Hammam, yes. ये Sauna, hammam, yeah, the same here. हम्माम की वही रास्ते हम्माम का वही अंदाज। Now there's the restaurant. Yeah. So that smell. और हम्माम में रोशनी है और फिक्री रोशनी है और हवा है। यहाँ इस वक्त रेस्टोरेंट बना हुआ है। हम्माम This is the biggest gate in the between the gates because there are the 4 gates. This is the biggest one. There are almost 15 rooms inside. And this कहते हैं place, इसमें yeah. 4 दरवाजे हैं। ये बड़ा दरवाज़ा है और इसमें 50 कमरे हैं। बाएं सारे कमरे हैं। This place served as a temporary prison sometimes. There are many rooms and most of them used as a prison. Zindan. बिल्कुल यही सूरत हाल दिल्ली दरवाजे के अंदर भी है। दिल्ली दरवाजे की तामीर भी ऐसी है। This part is outer city. This is the beginning of the outer city from that place. This is the masjid. People still praying here in Friday. Juma. In Juma. They are praying. हम एक इस वक्त बुजुर्ग के पास जा रहे हैं। बाबा जी हैं, खड़े हुए हैं। पुरानी निशानियाँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने 2 निशानियाँ हैं। एक पुरानी यादें उज़्बेकिस्तान केवा शहर की, जो कि ख़वारिज़म का एक शहर है। एक नई यादें, एक पुरानी यादें। एक पुराना अंदाज है ज़िंदगी का, एक जवानी का नया अंदाज है। मैं पुराने अंदाज से भी मोहब्बत करता हूँ, इस नए जवान से भी मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए दोनों काबिल इहतराम हैं।
ये मिटी हुई मेरी निशानियों की निशानियाँ हैं, ये नई ज़िंदगी की तरतीब है। ये मस्जिद आबाद है, ये शहर किले के बाहर ये सारा शहर है, और मज़ीद भी किले भी हैं, मदारिस भी हैं, मस्जिदें भी हैं, लेकिन ये किले का दरवाज़ा है, 4 दरवाजे हैं। अदियत Bizim okulda mı Ermeniye'de abi familiyam yanıp da yerler böyle familiyam. फैमिली ने फैमिली You know the İngiliz Kur'an'ı doğru mu? İşte var. Kur'an okuyap ben. Ha, o başladı. Okuyup ben. Kur'an'ı. He's now Familiyam studying yaptırmıyor Quran. ben. Before Okumam ben. Yeah. In childhood, he couldn't write even the name, but nowadays he could read the Quran and read and write the Quran in Arabic. This is one of the strengths of the Quran. İnsan. Çok oldu. Alhamdulillah. सलाम रहमत Ana rahmet Şeyh'tan ina istedik rahmet. Özüne yakkan, köyüne yakkan kimselere savga berber kılın. Bu rahmet Pakistan'da. Özüne gen oldu göresi var. Bazı amca işte ya. Şaka şaka. رحمة ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أستغفر الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع رحمة رحمة Nakşibendi tarikatında Şeyh eken bir Allah. Çünkü bu hakkında iyi işler. Şeyh Mehmet'lerine işletiyordu. Çünkü ziyaretine bilgi geliyor. One of the top of Karavasaray, don't you know? Karavasaray. You know that before this place, there were no the madrasas and no Karavasaray. Before there was the long wall like the similar to us walls, and because the brother of the king died out. Nowadays the main shopping center in here. Bazaar, yeah, bazaar. Big bazaar. السلام عليكم Look at this love here. And before every student had the love in this madrasa. अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठे पुराने बर्तन बना रहे हैं, भट्टियों में डाल रहे हैं। पुराने बर्तन ऐसे पुराने बर्तन होते हैं, फिर ये बैठे बना रहे हैं। Hayırdır? Pakistan hocam. Pakistan. नक्शबंदी तरीका। Pakistan'dan mı ya? Selamünaleyküm. Usta falan. Kaydan bu. Bu Pakistan'dan bu taraf Nakşibendi tarikatı boyunca Şeyh hisoblanadi. Şu Khiva hakkında eshitib, beni bir ziyorat qilmoqqa gelib. Bir ziyaret makarım. Bir ziyaret kılsana bize bir dua kılsınlar şimdi yakın. आतिना फिर दुनिया हसनतन
برحمت رحمت رحمت. Look at this road. This is the king's road. Look at the stony road. Yeah. Palace. 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 Saray. Karvansaray? No, no, palace. Palace. The king's. This one like the king's bed and office. So this is the called as a Ashur palace, which means stone yard palace, erected by Allah Khan, and there are the three parts: the hotel, reception, and harem part. The construction here belonged to 1830 to 38, in the second part of the 19th century. There are so many rooms inside in this palace, and we call it as a elaborate palace, the name of this palace. So let's start from the reception part. So these were the two rooms called Mirzas. Mirzas wrote the guest's name every time for registration, and they entered the king's reception by this gate. Because the Kunya are reception also similar, but this is the Kunya old. Kuna. What in Urdu? Kunya. Kunya. Kunya, yes. Kunya means old. Yeah, old in our language. Kochna. Kunya. Coconut? Kochna. Kochna. Coconut. Kochna is old. So this is the king's reception, but this is the bigger and untouchable. Look at this, no restoration in here. So this is the two-story. The first one for reception, second story library. And this is only for summertime. In wintertime, look at this, the round. They made up the yurt, masters made up the temporary yurts, and king accepted everyone inside. Because there were no heating systems like nowadays in the past. That's late. So, and the king's reception entered by the two gates, which means the man entered another gate and woman entered a separate gate. Not all of them entered by the gate, one gate. There were the separate gates. So this is the doors, the short doors, the example of the short doors in this part. So this is the pillar base. Look at this pillar base. Made by the chinar. Do you know the chinar? Yeah, this is made by the chinar. Yeah, chinar tree. This is the king's wheels, carriage wheel, made by the local masters. And here added the iron part. Look at this iron part. Because of our road was the stony. So that's why they have to add the iron part to keep the wheel more stronger. Okay, this is the hidden passage to King's harem, and the only king entered by this way. Now let's see the hotel, and then we go to the harem part. First, hotel. This is the hotel. The hotel existed on that time, not nowadays. On that time, in Khanate period, which is the guests like you visiting Khiva, they stayed in this hotel. Yeah. All the places are decorated with the same Abdullah. And it's the Buddha towers. Abdullah, the master Abdullah. Yeah, not Amir. Yeah, because of the, yeah, this way. There are many doors
many passages, which means you can lose your mind. Which means which door lead to outside to King's Harem. The main entrance. Yeah. So this is the King's Harem. Harem part. King's bedroom. Harem. Haram. Yeah, Harem part. Women's, yeah. The king. King's luxury bed, and because of the king. बादशाह का बिस्तर ये है, ये बादशाह क्या ख्वाबगाह है बादशाह. This part the hidden passage, which is the wives entered by this way, because king didn't visit wives' room, you know. Yeah. The different ornaments. Look at this part. And this part for concubines in this part. Yeah, we passed by this way. Yeah, I want to show the whole the rooms of. Every wife had their own room, and the wife lived with her children separately, additional rooms. Local people house. Yeah, nowadays people are starting the business for opening the hotel and the restaurant for like the main income. We have left which is the dinamiklarımız. Bu taraf Naqshbandiya tariqati bo'yicha Pokistonda Sheikh hajatlarida saqlanadi. Shu Khiva haqida eshitib, bu yerni ziyorat qilishga kelgan ekan. Ixlos etib o'zini yaqqan kimsalari shuni o'zini sovg'alarini. Pray. ربنا آتنا في الدنيا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين آمين برحمتك. So look at this, all the pictures which is describing here end of 19th and beginning of 20th century in Khiva. All of them taken by this guy. First photographer, Udayberga Divano. He was born in Khiva, Russian, French camera, and he took all this the necessary pictures, important pictures, described all Khiva life in here in 19th, 20th century. And he was also the Shah, the first movie in here. Why? Yeah. Khiva. La fruta esa de plástico. Here there is a lift. How to go up? Okay. So this is the Istanbul Madrasa and minaret, which is the completed in the beginning of 19th century, which is the 1910. This is the minaret, completed by the master. This is 57 meter height, which is the highest point of Central Asia. 57 meter height. Allah Muhammad Abu Bakr Umar Usman Ali. Allah Muhammad Abu Bakr Umar Usman Ali. So, you know, because in our time, most of
Arabic schools closed, so that's why we couldn't. The traditional clothes, both sides. Look at this, both sides. It's Yes, described Khiva ladies and men. Assalamu alaikum. Allah. Before, every room had the own gate, own door. Look at this door. अंदर से खोला है असल में Yeah. बाद After that, they reconstructed a long corridor. Before, there were no corridors. All of them were separate rooms. हाँ for सेपरेट रूम every मैं हैरान थी ये क्या है حيران 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 حاول تسمعنا طبعا اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين برحمتك Baş böyle şu bir de resim şu olsun şöyle. sen bana da Ya hayal benim hani. Yahya Yahya name of this kid. Yahya. Apa da böyle. O geliyor mu? O geliyor mu? Rahmat. अपने बच्चों को मोहब्बत के लिए हाथ फिरवा रहे हैं दुआएं करा रहे हैं तस्वीर बनवा रहे हैं जवान आया कहते हैं तस्वीर बनानी है अल्लाह इस जवान को पूरी उम्मत की हिदायत का जरिया बना आमीन Dua Allah. Assalamu alaikum. Afghanistan. Ziyaretiniz kabul olsun. Assalamu. Yeah, interesting. So this is the Sheikh Khan Madrasa, one of the third madrasa in Khiva history. Before building this madrasa, there were only two madrasas, only two, which is developed beginning of 18th century. And he has studied so many foreign famous students. Kamil Khwarazmi, the first musician in Khiva. Kamil Khwarazmi, the first musician. म्यूजिशियन Yeah. कामिल ख्वारिज़मी Yeah. Bestekar.
चापान Chapan, the clothes. Woman, the इसका men. नाम चापान है Chapan. What's called in Urdu? Chapan? अबा Good student. Agenias. He was a poet. हाजी नियाज Agenias. You know. It's a Karakal style. Karakal design. You know that we have the one autonomous republic in Uzbekistan territory. करकल पाकिस्तान Karakal, Pakistan. And here, look at this. First, this is the portrait. Becket Ata, who studied in here in medicine. He was a doctor. After completing this madrasa, he opened a school mosque. It's a school mosque in Kazakhstan, in Aktau. He opened this school mosque for teaching the students in here. And this is the author of the foundation of the Becket Ata in Kazakhstan. Başkanlar yeni bekliyoruz. This is the mausoleum. Here the famous Saint Louis. Razı olun. Allah razı olsun. Yaxshi. सौगाती Şeyh Hazretlerinden sonra इन्होंने मुझे एक पेन दिया है इसमें ये सारी लिखी हुई है ये सारी Khiva. पिक्चर्स की खीवा की ये Şeyh Hazretlerinden sonra Rahmet. Sağ olun. पदर के देख क्या कह रही है Şu olsun ya orada. Hediye. बस एक आयत काफी इसको हदिया दो भाई रहमत 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 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। Assalomu alaykum. Ulan mehman var, 3 mehman geldi. Mutlu'da beraber. ये मकबरा किसका है Ben var. पहलवान महमूद का मकबरा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम لا إله إلا الله ولا شريك له السلام عليكم Pehlivan Mahmud buried in this spot. In this spot, Mahmud buried. The original Mahmud. الأخيار منهم والأموات برحمتك King. Sheikh. Buried in here who erected this the big blue dome. Allah Muhammad, the whole.
बादशाह का मकबरा है। शाह मकबरा। जी बादशाह। अल्लाह अकबर। नया बयान का जोड़ा हमारे पास आ रहा है इधर। उनके चेहरे पे नकाब है। वो ख्वाजा महमूद पहलवान के दरबार से हाजिरी दे रहे हैं। यहाँ पर्दे के साथ आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा बिरहमतिका या रहमत। His family buried him here. His brother, बादशाह किंग the royal family mausoleum. Right. And here, look at this one. Huge children. Children buried in here. Who died checked by disease. Imam Azur. This part is the local people house. And the north and south part. Yeah, before the most of the imams gathered in here, which is the for like ये बरामदा है। changing ये experience. बरामदा है। Yeah. ये बरामदा है। Yeah. ये इमाम का घर था जो मसाजिद के इमाम बड़े बड़े यहाँ होती थी। ये उनके घर पर थे। इमाम के मुहद्दिसीन के औलिया के घर थे जो लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। Bomb Karga. This is also Kari Khana before. One of the example for Kari Khana. Sheikh Hazretler'in anlatımı. कारी खाना खाना कारी खाना यानी उन लोगों का घर जो यहाँ खिदमत करते थे। उनके घर थे मसाजिद का इमाम मुहद्दिसीन औलिया सुलहा। अस्सलाम वालेकुम। It was madrasa before, but nowadays the carpet workshop, which is the ladies weaving the carpet by hand. Carpet, look at this, the carpets, all of them done by hand. जी जी वो खड़ी खड़ी है वो कारपेट बनाने वाली। ये सारे धागे खड़े हैं कारपेट बनाने के। कारपेट बनाने के धागे हैं। Say hello to them, we saw this. Say it aloud them. It was aloud. अस्सलाम वालेकुम। The walls, ancient walls in here. Every part, every time reconstructed. All the same thing.
24 yıllık 99 bu nerede de? Akmak telefonlara da de, balalık etme de. Davay, davay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीवा शहर में है और गंज के साथ है और ये ख्वारिज़म जो है इनका रीजन है। तो ये कबूल खाना है बादशाह के पास, इसका नाम कबूल खाना है। बादशाह के पास जो आके वो ठहरते थे तो उनको रिहाइश देने के लिए, उनका एहतराम, उनका इकराम, ये कबूल खाना है। और इधर के सारे उनकी रिहाइशें हैं, ये सारी हमारी तरफ। और यहाँ मैं मेहमानों के लिए, मेहमानों के एहतराम के लिए वो यहाँ आके रहे, ठहरे, उनकी रिहाइश। और फिर यहाँ बादशाह का हरम चला है, बादशाह रहीम खान, फिर उसका बेटा बादशाह बना असफंद यार खान। ये चूँकि स्टेट थी ख्वारिज़म शाही, ये स्टेट थी, तो ख्वारिज़म शाही स्टेट की महल्लात हैं, किले हैं। इसलिए इसको कबूल खाना कहते हैं। जी, ये हरम, हरम सराय, हरम। Yeah, this part of the house. And this palace consists of the big 4 yards. And there are the big 4 yards and the main reception outside. ये उनका रिहायशी निज़ाम है, हरम सराय है। ख़वातीन फैमिली के रहने की जगह है। ये देखें सर, फैमिली, ख़वातीन, घर वाले यहाँ रहते थे बादशाह के। वहाँ वो कबूल खाने में बादशाह लोगों से मुलाकात करते थे। ये सारा अभी इसको इन्होंने मार्केट बनाया हुआ है। सारा बादशाह का महल है, ये महल का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। ये सारा बादशाह की हरम सरा का नाम था, हरम सरा रिहाइश है। हर रिहाइश के साथ लॉन्ड्री की जगह भी होती है। ये हम इसको कबूल खाना में हैं और कबूल खाना के साथ ये बादशाह की रिहाइश है। जो बड़ा बादशाह था, तुर्की बादशाह का बड़ा, ये एक सजा का मंजर दिखाया गया है कि बादशाह की नाफरमानी करने पर ऐसी सजाएं होती थी। ये दरियाए आमू किले से जंग का निज़ाम। ये जो बड़ा बादशाह करते हैं रहीम खान, मोहम्मद रहीम खान, मोहम्मद रहीम खान No, Khiva. Khorasan finished after 13th century, you know, after Mongol conquer, the Khorasan were empire totally finished, and then became the Khiva.
पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, पुराने मंदिर खींचे जा रहे हैं कि पुराना ये खीवा शहर है सारा, फिर उसकी फौजें हैं बादशाह की, फिर बादशाह खुद है, उनके यहाँ बच्चों की तालीम का क्या एहतमाम था। Yes, the Konya village. कोनिया First capital of the Khwarizm. And this is the Isfandial. ये अस्फंदियाल है, Son of the Rahim Khan. This is the Rahim Khan. ये रहीम खान है, खीवा का जो किंग है, ये रहीम खान के This is the writer, famous writer. जी This is the policeman of the Khiva Khanate. जी This is the Prime Minister Islam Khaja. प्राइम मिनिस्टर इस्लाम खाजा। Islam Khaja. Rahim Khan and his the viziers. ये This is also one of the vizier. वज़ीर Vizier. This is the Juma Mosque. जुमा मस्जिद। Yeah. In 19th and 20th century, given short minaret and Amin Khan Madrasa. जी Yeah. Modern and ancient tracks. ये नई चीजों को उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, इस वक्त हम बादशाह के महल लौंडियाँ घर और बादशाह का महल, हम वहाँ सारा ये फिर रहे हैं जो खीवा का बादशाह था रहीम खान और रहीम खान और उनसे बैठे अस्फंदियाल खान। ये सामने कबूल खाना जो हमने अभी देखा। King Asfandiar Khan lived until 1920, and after that is the Russian Empire conquered Khiva totally. And the end of the Khiva Khanate. हम कबूल खाने में दाखिल हो रहे हैं। Beginning from Muslim style in Khiva. Here European style combined in here you can see. फन तामीर का एक शाहकार है, हुस्न और जमाल का एक शाहकार है। जिसमें मेहमान आके ठहरते थे। कबूल खाना, मेहमान खाना, ये सब मेहमान खाना है। ये आपके लिए सख्त सर्दी होती थी, अब तो सर्दी कम हो गई। आतिशदान ये System. आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। ये रहीम ख़ान, असल में मुंह से रहीम यार ख़ान ही निकलता है, तो रहीम ख़ान यहाँ का बादशाह, तो उसका ये एक बाग है, किबला ताज़ा बाग, ये उसका एक बाग है, महल है जो उसने बनाया। बीवियाँ ज़्यादा थी, औलाद भी थी, उसके लिए फिर उसने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने महलात, अपने बागात बनाए। वो सर्दियाँ यहाँ गुजारता, क्योंकि यहाँ सर्दियों से मुराद सर्दी होती थी। अभी आज अक्टूबर है, अक्टूबर की कितनी है? 22। आज 22 अक्टूबर है, मंगल का दिन है, और कुछ सर्दी नज़र ही नहीं आ रही। हमने समझा था कि शायद यहाँ सर्दी होगी, और ये उज़्बेकिस्तान का शुमाली इलाका है, लेकिन यहाँ कोई सर्दी तो है ही नहीं। तो ये उसका महल है बादशाह रहीम ख़ान का, जो कि खीवा का बादशाह था। बुनियादी तौर पे ये ख़ुरासान जो है ये एक स्टेट थी, लेकिन जब चंगेज़ खान हलाकू खान ने इसको बर्बाद किया तो बस ये सिमट के फिर खीवा तक रह गई, और खीवा फिर बादशाह का मरकज़ बना, कैपिटल बना, और बादशाह फिर यहाँ रहता था। फिर 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार, जंग अज़ीम अव्वल, उसके बाद फिर रशिया ने रही से सारी ज़िंदगी का निज़ाम, ये सारी कैफियतें ये उसने ख़त्म कर दी। इसकी सुकून कमरे इमारतें। अब देखें ये सिर्फ हाथ धोने के लिए बेसन कैसा है, आप इसको ज़रा नोट करें। ये हाथ धोने के लिए ये एक बेसन है, और बहुत खूबसूरत अंदाज है इनका, तामीराती अंदाज, रहने उठने बैठने का अंदाज, ये पुराने कमरे, वो पुराने दरवाजे, ये देखें ये पुराने दरवाजे। महल का एक अंदर और हिस्सा है, इसको ताला लगा हुआ। ये महल अंदर मौजूद है बादशाह का, इसको चारों तरफ बरामदे, दरमियान में तालाब, और वो रिहाइश है, कमरे सारे मौजूद हैं। हर चीज़ उजड़ी हुई है, वीरान है। बादशाह ही ना रहा तो बादशाह की ज़िंदगी ही ना रही, सब कुछ उजड़ा हुआ। आप इसको देखें, न गोरे सिकंदर न रही कब्रेदारा, बिके नामियों के कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल हैं न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे फिजा कैसे कैसे। हर एक दिल में है, हर एक दिल पे है दागना, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे। ये भी उसी का एक हिस्सा है, आप इसको देखें जरा। ये बादशाह का जो महल है, इसकी ये वही हालत, कबूल खाने की तरह खूबसूरती, कमरों के अंदर हुस्न जमाल, जो कि आप ये आने वाले के लिए ये मेहमान खाना, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब बना हुआ है।